فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم اللهم صل. Can we please recite Shafa'e Mareez for all of our brothers and sisters in Islam who are not feeling well here and elsewhere. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra iza da'ahu wa yakshifu as-su'. Amma يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك ورحمة الله وبركاته.
नहीं नहीं स्मूथ है। Why they're waiting? बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो पढ़ने वाले हो तो इधर दो खड़े थे पढ़ने वाले। अगर मेरी आवाज़ बाहर जा रही है तो जो हमारे साथ पढ़ाने वाले हैं वो अगर तशरीफ़ लाएँ तो इंतहाई ममनून होगा। आज आखिरी मजलिस है इस अशर की, शब-ए-आशूर की। नहीं वो पढ़ने वाले आ जाए तो काफ़ी है, मजलिस तो मौला के लिए कर रहे हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जोश मलियाबादी के 4 मिसरे। सुनाए अपने दर्दो गम के अफसाने नहीं जाते, सुनाए अपने दर्दो गम के अफसाने नहीं जाते, लगे बैठे हैं उनके दर से दीवाने नहीं जाते, लगे बैठे हैं उनके दर से दीवाने नहीं जाते। हुसैन इब्ने अली ने फित्र से बदली है एक शब में, हुसैन इब्ने अली ने फितरतें बदली है एक शब में। भाई बुझी है शम्मा और महफिल से परवाने नहीं जाते, सुनाए अपने दर्दो गम। सल्ले अला मोहम्मद वाले। छोटी सी लहर
बदरन में बनाते हैं हुसैन, छोटी सी लहदरन में बनाते हैं हुसैन, लाशाली असगर का छुपाते हैं हुसैन, बानो ना निकल आए कहीं मक्तल में, खेमे की तरफ देखते जाते हैं हुसैन, छोटी सी लहदरन में लोया किया जो प्यार से असगर तमाम रात, लोया किया जो प्यार से असगर तमाम ख़ैमे हुसैन में महशर तमाम रात था, ख़ैमे हुसैन में महशर तमाम, और प्यासों के इश्तियाक में मानिंद चश्मे तर छलका किया बहिश्त में कौसर तमाम रात, रोया किया जो प्यार मर जाए जो फर्जंद तो क्या चारा है, मर जाए जो फर्जंद तो क्या चारा है, बस सब्र इलाजे दिले सद पारा है, असगर को लिटा के कब्र में कहते थे हुसैन, अरे आराम करो बस यही गहवारा है, मर जाए जो फर्जंद निकले खेमे से जो लेकर
अली असगर को हुसैन निकले खेमे से जो लेकर अली असगर को हुसैन दोनों हाथों पे धरे थे तने लागर को हुसैन उस पर डाले हुए एक उजले से चादर को से धूप में साया किए लाते थे दिलबर को हुसैन धूप में किए लाते थे दिलबर को अश्क आँखों से न थमते थे बहे जाते थे लड़खड़ाते हुए मजबूर चले जाते थे निकले खेमे से और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु चांद मिसरे हजरत अब्बास के, इसलिए मैं मरसिया पढ़ूंगा, सलाम न्याज पढ़ रहा हूँ। दुरूद बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरते अब्बास शाहे लफता के शेर हैं हजरते अब्बास शाहे लफता के शेर खंदको खैबर के वो ये करबला के शेर हैं खंदको खैबर के वो ये करबला के शेर क्यों न हो हर जंग में ये मिस्र है दर कामियाब क्यों न हो हर जंग में ये मिसल है दर कामियाब वो खुदा के शेर ये शेर खुदा के शेर है हजरत अब्बास शाहे सूरे फातिहा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हो जब फातिमा के सब गुले तरखूं में भर गए, जब फातिमा के सब गुले तरखूं में मर गए, मक़तल की राह से सफरे खुल्द कर गए, बेकस के सारे चाहने वाले गुजर, अब्बास मर गए, अली अकबर भी मर, अब्बास मर गए, अली अकबर भी मर गए, अब्बास मर गए, अली अकबर भी मर गए। फिरदौस को रवा हुए मुंह मोड़ मोड़ के सब चल बसे हुसैन को गुर्बत में छोड़ के सब चल बसे हुसैन को गुर्बत में छोड़ के, जब फातिमा के सब गुले तरहूं में भर गए, और रेती पे बर्छी खाए पड़ा था जो नूरैन, बैठे थे दिल को पकड़े हुए शाह मशरक़, नागा एक कनीज पुकारी बशोर से, दम तोड़ता है प्यासे बेशीर या हुसैन, दम तोड़ता है प्यासे बेशीर या हुसैन, लिल्ला जद खेमे में तशरीफ लाए, बानों का लाल रूठ गया है मना, बानों का लाल रूठ गया है मना, ये बानों का लाल गया है मनाइए। साबिर ने सब जफाएं सही बद्दुआ के घर लूट गया पमू से शिकायत जरा, की औरों को रोए अपने पिसर की अजान की, बेटा जवान मर गया आहो बुकान की, बेटा जवान मर गया आहो बुकान की, इतना कहा के गम से जिगर चाक चाक है, ऐ लाल अब हुसैन के जीने पे खाक है, ऐ लाल अब हुसैन के जीने पे खाक ऐ लाल अब हुसैन के जीने पे खाक है। बिस्मिल हुए ये सुनते ही मजलूम कर बला उठे कमर पकड़ के बसर ना लो, आए जो खेमा गाह में देखा ये माजरा, मन का ढला है सर्द है बच्चे के दस्तों पा, मन का ढला है सर्द है बच्चे के दस्तों पा, झूले में जा बलब जो है अजगर पड़े हुए रोते हैं बैत पैगंबर खड़े हुए रोते हैं अहले बैत पैगंबर खड़े हुए। गो दिल को उल्फते पिदरी ने हिला दिया पर झुक के कान में कोई मुजदा सुना,
दिया। अरे बच्चे ने आंखें खोल दी और मुस्कुरा दिया। हाथों को शय की सिमत हुमक कर बढ़ा दिया। हाथों को शय की सिमत हुमक कर बढ़ा दिया हाथों को शय की सिमत हुमक कर बढ़ा दिया। फिर ज़ौफ़ था न प्यास से हालत तबाह कल कारियां थी और सुबह मक्तल निगाह कल कारियां थी और सुए मक्तल निगाह। अरे मुरझा के खिल गया वो गुले तर जो एक बार ज़ैनब ने की ये अर्ज के ऐ शाहे नाम क्या कह दिया के प्यास भी भूला ये शेर बोले कहा था हमने के उठो पिदर बोले कहा था हमने के उठो पिदर निसार बोले कहा हमने के उठो पिदर निसार। अरे अकबर शहीद हो गए उम्मत के वास्ते अब तुम भी जान दे दो शिफाअत के वास्ते अब तुम भी जान दे दो शिफाअत के वास्ते। अरे उम्मत का पास है जो मेरे पास आए माँ से भी शौक मर्ग में आंखें फिराए बानो पुकारी क्यों न हो जहरा के जाए हैं इखलाक मुस्तफा मेरे बच्चे ने पाए इखलाक मुस्तफा मेरे बच्चे ने पाए दिल पर खुशी से दाग में इनको उठाऊंगे सब मन्नते जनाजे पे रोकर बढ़ाऊंगे सब मन्नते जनाजे पे रोकर बढ़ाऊंगे। अरे लो आओ बीबियो इन्हें दूल्हा बनाओ जुल्फे सवारू आंखों में काजल लगाओ सब हंसलियां भी तौक भी इनको पहनाऊं मैं अकबर को तो बुलाओ के सेरा मंगाओ अकबर को तो बुलाओ के सेरा मंगाऊं मैं। इन लफ्ज ने कलेजे में नश्तर चुबो अरे ज़ैनब तड़प के रह गई शबीर रो ज़ैनब तड़प के रह गई शबीर रो दूल्हा बना जो बानुए सरवर का बेल ज़ैनब बनाए लेने लगी हो के नीम मुँह चूम कर जो सबने दुआ दी बसत फुगा असगर का हाथ माथे पे रखकर पुकारी असगर का हाथ माथे पे रखकर पुकारी अरे लो बीबियो अपने कलेजे को थाम लो रूसा तलब असगर नादा सलाम रूसा तलब असगर नादा सलाम अरे गुल पड़ गया के असगर बेशीर ऐ नूर है ऐ नूर है न हजरत शबीर अलविदा माल फिराक कहती थी हमशीर अलविदा किस्मत पुकारी आए हदफे तीर अलविदा किस्मत पुकारी आए हदफे तीर अलविदा औले नबी को हिज्र के सदमे बड़े हुए बच्चे भी शोर सुन के करीबा खड़े बच्चे भी शोर सुन के करीबा खड़े हुए
असगर को लेके घर से शहे बैर बर चले दर तक तमाम अहले हरम नौहगर चले बानो पुकारी आए मेरे लगते जिगर चले बच्चों का शोर था अली असगर किधर बच्चों का शोर ताली असगर का चले क्या खैर है गुलामों से मुंह मोड़े जाते हो ऐ शायदी के लाल हमें छोड़े चंदन की जाते सहम हो ऐ शायदी के लाल हमें छोड़ जाते हो असगर को लेके दश्त में आए शहे खुदा बच्चे का मुंह दिखा के ये फौजों को दे ये बेजबान रहम के काबिल नहीं है अरे 2 दिन से इस गरीब को पानी नहीं मिला 2 दिन से इस गरीब को पानी नहीं मिला बच्चा निडाल है इसे थोड़ा सा आप दो सूरज सवाल है ये थोड़ा सा आप दो सूरज सवाल है इसे थोड़ा साब अरे दो फिर मुंह को चूम कर अली असगर को दी निदा तुम भी तो कुछ इशारों से कह दो पिदर पिदा समझे तो ये के हो पिसरे हो जदे खुदा बच्चे ने की ये सुन के नजर सू यश किया बच्चे ने की ये सुन के नजर सूए यश किया मुंह से न कुछ कहा पर जो कहना था कह गए सूखी जबान फेर के होठों पे रह सूखी जबान फेर के होठों पे रह गए सूखी जबान फेर के होठों पे रह गए हाकिम ने हुरमुला से इशारों में कुछ हंसता हुआ वो शो कमी का तो चला बच्चे हुआ वो शोर कमी गाह को चला बच्चे को लेके पीछे हटे शाहे करबला नागा जमीन कांप गए आसमान नागा जमीन कांप गए आसमान मातीर गम लगा के वो सफाक हट गया यहाँ तो पर तड़प के ये बच्चा उलट गया यहाँ तो पर तड़प के ये बच्चा उलट गया अरे बाजू छिदा हुसैन का बेशिर का गला भर के रह गए मजलूम करबला बेटे के सिमत देख के बोले के मैं फिदा क्यों मेरी जान प्यास बुझी हल्क तर हुआ वो क्यों मेरी जान प्यास बुझी हल्क तर हुआ जाकर रियाज़ खुल्द में अब शीर पी दादा अपने सब्र की मेरे बाबा से ली दादा अपने सब्र की मेरे बाबा से थी गर्चे उल्फते पिदरी से न दिल को था फितरत से लड़ रहा था मगर जाने बू दिल रो के कह रहा था कि है दिल बरे इस इम्तिहान में भी हुआ बाप का इस इम्तिहान में भी हुआ बाप का
इस इम्तिहान में भी हुआ बाप कामयाब। शौको तो तीर खींच ले हम मुंह को फेर के ऐ लालूफ न कीजियो पेते हो शेर ऐ लालूफ न कीजियो पोते हो शेर के जब फातिमा के सब गुलो मैं सामीन से भी और मौलाना से भी माजरत चाहता हूँ। 5 मिनट ऊपर मैंने पढ़ा, इसीलिए मैंने सलाम नहीं पढ़ा, मरसिया पढ़ना था मुझे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हज़ार आज के शब के प्रोग्राम सुनने जब तक क़िबला ज़ेबी मेंबर हों। इस मजलिस के फ़ौरन बाद मातम और जो हाजी वाजी निकलेगी, उसके बाद ठीक 12 बजे ख़वातीन इस अज़ा खाने में तशरीफ़ लाएंगे और उनकी ख़वातीन की मजलिस होगी। जैसे ही वो मजलिस ख़त्म होगी, उसके बाद जो न्यूयॉर्क का और दूसरे मातमी आते हैं वो यहाँ पर अज़ादारी करेंगे और नमाज सुबह पे वो ख़त्म होगा। नमाज सुबह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बाजमात हो, कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर नमाज को लीड करेगा। और उसके बाद कल सुबह का प्रोग्राम 10:30 बजे आमाल रोज़े आशूर और 11 ठीक 11 बजे आप 10:30 आ जाइएगा। 11 बजे शुरू करने का है, तो 11 बजे आप कहेंगे तो 11:30 आएंगे, तो 10:30 बजे आप यहाँ तशरीफ ले आइए, वज़ू कीजिए। 11 बजे ठीक आमाल शुरू हो जाएंगे। आमाल ख़त्म होने के बाद जो जुम्मतुल की जो नमाज है वो होगी और उसके फ़ौरन ही बाद मुझे ऐलान करने की ज़हन में आ रहा है, जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह मजलिस से रोज़े आशूर और रोज़े मजलिस के बाद फ़ाक़ा होगी और उसके बाद मजलिस नमाज मग़रिबैन के फ़ौरन ही बाद विदाउट एनी डिले मजलिस शाम ग़रीब। इस तरह से हम इस अशरे को इख्तिताम तस्लीम होंगे। जहन में रखें कि जनाब ज़ैनब पर जो मुसीबतें नाजिल हुई हैं वो शान ग़रीबा के बाद है और अमूमन ये होता है कि मजमा हमारे पास शान ग़रीबा में भी होता है, रोज़े आशूर में भी होता है, मगर सोएम के वो जो 2 दिन है जब काफ़िला तैयार हो रहा था जाने के लिए, यहाँ पर बहुत कम मजमा होता है। कोशिश कीजिए अपनी फुर्सत को निकाल के। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु One more salawat in the name of our 12th Imam, Imam Sahibul Asri wa Zaman. Shahe Madlum jab aayi Shab-e-Ashoor कहा सर को कटाने की यही एक रात है बाकी सकीना लगी कहने के बाबा कहो मुझको तुम्हें क्या सर कटाने की यही एक रात है बाकी मेरे बीमार भाई को मेरे नाचार भाई को करी बेड़ी पहनाने की
यही एक रात है बाकी। गला नाजुक कटाने की मेरे प्यारे मेरे प्यासे मेरे भैया अली असगर की यही एक रात है बाकी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। Surah Fatiha for all of our marhumeens. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. روحي وجسمي ورواه العالمين لك الفداء يا ابن رسول الله. ثم السلام عليكم يا أهل العزاء الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياهي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. Tonight being a Shab-e-Ashoor, let us do tawassul of Abu Abdullah al-Hussein,
that there are many members of our community here and elsewhere who are not feeling well. We ask Abu Abdullah al-Hussein, and through his wasila, that may Allah give them a very quick and early recovery. Ya Aba Abdullah, Ya Hussein ibn Ali, أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيحا إن الله اشفع لنا عند الله، يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات. We've come to the end of the Ashra. Tomorrow, of course, is Ashoor and Shab-e-Ashoor. Some of the things that are important on the day of Ashur is the fact that we take the time and effort, whether we are doing it at home or we are doing it here. Wherever you may be, try to perform the amal of Ashoor. You see these walls of the mosque, of the centers. On the day of judgment, they will also speak. Because on the day of judgment is the day of justice. They will also speak that you used to come here and used to perform your du'as, your amal, your attendance, just like the stone of Hajar-e-Aswad. These walls will also speak on the day of Qiyamah and say that I bear witness that they were here for Azai Hussein alayhi salam. One of the things that we hear that on the day of Ashura, Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam had said, Hal min nasirin yansuruna. Is there anyone out there who can help me? The question is, who was he asking that from? The people who were there were his enemies. So who was he asking to announce in public? And he said, help me, is there anyone out there? On the day when he was fighting, Jibreel Amin comes, Mikael comes and said, let us help you. And Imam said, no, I don't need your help. It is not about you. Who was he asking that help from? The help that he was asking for is not because when you look at the people were all his enemies. There were very few left.
And for them, it was not important for Imam to say, Hal min Nasirin, come here and help you. There was not much left there. But what he was trying to do is he was trying to call upon the believer of Ahlul Bayt until the day of Qiyamah, until the day of judgment. What sort of help was he asking us for? What was sort of? In Ziyarat-e-Warisa, we recite, Ashhadu annaka wa akamta as-salat wa atayta az-zakat wa amartha bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. This Ziyarat-e-Warisa in Ziyarat-e-Ashoor has been given to us by our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. They are one of the most authentic ziyarats that we have. In that ziyarat, Imam is saying why he went to Karbala. He said, I bear witness that I went to establish salat, that I went to establish zakat, charity, basic charities, amr bil ma'ruf, to guide people towards goodness, and nahi anil munkar, to save people from doing something bad or evil. When Imam Zainul Abidin alayhi salam came back to Medina, when he came back to Medina, there was a man who approached him in Masjid al-Nabawi. And he said, you know, when you left for Medina from here, he's telling him, you had everybody. You had all the men, women. You had the best of everything. Your horses and everything were well prepared and equipped and decorated. Now that you have come back here, nobody is left, except there is black cloth everywhere. So what did you accomplish in Karbala? What did you accomplish? Imam alayhi salam told him, he said, I will tell you the answer. But before that, if you don't mind, go and do 2 rakat salat. Just go and do 2 rakat salat. Then come and I will talk to you. So he went. He performed his 2 rakat and he came back. And he said, now tell me. He said, now you want to know what did we accomplish in Karbala? The fact that you went to recite 2 rakat salat tells you that we were very successful in Karbala. He said every sajda that will be done until the day of Qiyamah will speak for Abu Abdullah Hussein and how he saved Islam in Salat. Right? Salat, because he talks about, I wanted to establish that Salat because it was gone. Nobody was doing any Salat, everything was gone. It was only a show-off by the Muslims in many cases, but otherwise many have ignored. And especially Yazid's army was completely finished. They were not into Salat or anything. Those who joined from Kufa, they performed Salat there. But there is something very interesting, my brothers and sisters, tonight. The actual Ashura day was supposed to happen today. Not 10 days, 9 days.
The war in Karbala was supposed to happen on the 9th, not on the 10th. Was supposed to happen on the 9th. But Imam Hussein alayhi salam gave a strong message to all of us. He says to Abul Fazl al-Abbas, he said, I want you to go and tell them that we need one more night. One more night. And therefore the war will happen on the 10th. What was the reason Imam Hussein gave to Abbas? He says, Abbas, go and tell them that we need this one night because of Salat and the recitation of the Holy Quran. Now think, Imam knows he's going to go to Jannah tomorrow. He knew that. All of them knew. Hazrat Abbas knew, Ali Akbar knew, everybody knew that they were going to go to heaven the very next day. Why ask for one night more for just Salat and Quran? That is an important message. In Surah Furqan, 30th ayah, talks about the fact that the Holy Prophet will complain to Allah subhanahu wa ta'ala. This is a holy prophet. He never complains. But in Quran, there is one place where he does complain. He complains to Allah subhanahu wa ta'ala that my followers have abandoned the Quran. Abandoned. Literally. They've left the Quran. Are we giving the importance to the Holy Quran? Holy Quran should be my life partner. It should be something that lives with me, within me. Because when the talqeen will be read on you, you will be asked, what is your book? It better be the Holy Quran and not Webster's dictionary. Understand? Or not some other books. You'll have to say Quran. Quran is the book. Now, how do you keep this Quran with you in your heart? I mean, we are very fortunate in this day and age that we have Quran in our WhatsApp. We have Quran on our iPhone. We have Quran in the car. We have Quran on YouTube. We have Quran everywhere. But truly, how many of us take the time to hear and or read the Quran? If there is one message that we can take tonight, that message is that we as adults must make a habit of reciting few ayats of the Holy Quran daily. How many minutes will it take us? Less than 2 minutes. Recite the Quran and just look at its meaning. That's it. Just two ayats. Because Mawla Kainat Hazrat Ali ibn Abi Talib, if I could request you all to please come in the front, people are trying to get in. By Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. By Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Please.
Thank you. I beg you. Move forward. So people who are coming in behind, please move forward. Thank you. One more salawat, please. Mawla Kainat Hazrat Ali ibn Abi Talib alayhi salam had said that a person who sits with the Holy Quran to read increases and decreases, he said. And so somebody like me came to Imam and said, what does it mean, increase? Increase, we know, maybe we know what will increase. What will decrease? And Imam said, the increase will be your knowledge. You will recite Quran 2, 3 ayah only. And you will be amazed at to what you will find in the Holy Quran. One of the unique miracles of Quran, I will tell you personally, is the fact that if you go 1 year later back to that same ayah, you will find a different meaning in the same Quran. It amazes you and it will make you wonder, oh, I missed this then. But no, I did read it. And I read the meaning of it in tafsir or whatever you have there. Read it. You see, dua, you are talking to Allah. Quran is Allah talking to you. That's so simple. When I want to discuss with Allah my needs, I talk to Allah subhanahu wa ta'ala for my needs. And what Allah wants us to be and what He wants from us, He's talking to us. And that is the Holy Quran. You understand? Imam's head is on the spear reciting Quran. And the trouble is that we, as Muslims, we have just not given importance to the Holy Quran. There are certain groups, and you'll have to put yourself in which group I am, because I do that myself. So which group am I going to be now? There is one group that recites Quran once a year. When? Holy month of Ramadan. Once a year. They will come, they will do their utmost to find the Holy Quran. If they don't have one, they'll go and buy one. Physical Quran, they will sit and they will read in the month of Ramadan. But as soon as Eid comes, I will recite Khatm Quran and I will say Sadaqallahu al-Aliyyul Azim, and it will go on a shelf. Khuda Hafiz, we'll see you next year. You have to see, am I in one of these groups or what? When I was in a seniors conference in Toronto some years ago, an old man stood up and he said, and I will tell you in Gujarati, said, Budhaoni halat આજકાલ આ દુનિયામાં એ થઈ ગઈ છે કે જે કુરાનની હાલત છે. He said the condition of the old man in this part of the world or anywhere in the world today is just like the Holy Quran. When a wedding happens, we take out the Quran. He said when a wedding happens, they will call me and say, Dada Bapa, tame kya cho? We need your blessings. They'll call me only when they need me. Otherwise, I am also put on a shelf, he said. Literally, like a Holy Quran. And that was an amazing statement. But when you think of it, it is so true sometimes. Because that's exactly, the Quran, see, are we the product of iPhone?
or is the iPhone our product? Something to think about, because this iPhone is controlling me completely now. It knows everything about me. Google it, about your own family, our own family. We have never told Google who we are, but they know who my wife is, who my children is, where do they work, where do they work, who is actually watching me. This iPhone is like those farishta Allah has put on left and right. This iPhone has become like that. It is keeping an eye on me and you as to what we are doing. It even knows market. It even knows. And then we have, what do they call that in our kitchens and everywhere? Echo or Alexa. She's hearing everything. Imagine, she's hearing everything that is going on in our home. Many a times I go and I may talk to my wife about certain product that I don't have any idea. I just say it to her and I didn't understand. And when I opened the Facebook, that product was there in front of me. This is how and what is happening to us all. Is taking full charge and control. Imam Ali alayhi salam said, make sure it does not control you, you control it. Quran is an important part of our life. And if Alexa hears that the only thing in this house is Quran, then they'll be really confused. Because they'll be looking for somebody to help Google as to what to do. Today, even when I want to keep a name of my child, I will not go to a Maulana or I will not look for a book. I'll go to Google. And then I'll keep my child's name Sinan. Google doesn't know what these people have done in this world. Sinan is one of the killers of Abu Abdullah Hussein. Why would I keep my son's name Sinan? And he may not even know until he grows up. You see, this is the situation we are in. But it is important that we realize that what Abu Abdullah Hussein was trying to convey us on this night, that listen, these two things are the foundation of your faith. Because the Holy Prophet on the day of Ghadir has said, Inni tarikun fikumus sakalain kitab Allah wa itrati. I am leaving with you two very heavy, he calls it heavy and weighty things. One is Quran and one is Ahlul Bayt. And Ahlul Bayt said that if somebody comes to you and gives you a hadith, this is a call of sixth Imam. If somebody comes to you and gives you a hadith, and if it doesn't match with what Quran is saying, throw away that hadith. Don't listen to it because it's not part of what we taught. There were many even reporters at that time. This Google was there, but it was in a different form. You see, there were a lot of them. And they were conveying these type of messages that they may not have any reality in it. Even when it comes to our history, Islamic history, I don't have the time to go to every aspect of every Nabi that has come on this earth. I don't have the time to talk about every Nabi. But if you look at even the life of every Nabi, one of those Nabis that was closest to Karbala was Hazrat Yahya. Closest to Karbala. But I don't have time to talk about Hazrat Yahya and what personality he was. But the thing is that if I open the Quran, little by little, I will learn something.
And that is why the sixth Imam said, take some time to read one page of Quran. You don't know, tomorrow you will step out after the Quran recitation. You don't know what's out there waiting for you. It will save you from any disaster that may happen in your life. That is Quran. Quran protects us. Quran will protect us in the qabr. It has to be my life partner in the qabr. I have to hold this Quran, hold it to my heart and say, please be my life partner on this earth and in the qabr and on the day of mahshar. Be my guide. Help me in every way that you can. See, that is Quran. The second group is a group that will read the Quran in the holy month of Ramadan, but then they will keep it unless somebody dies. Then I open the Quran. I read Surah Yasin. And Allah said, this Yasin that you are reciting is not for the dead. Your effort will give them sawab, but it is for you who is living. He said, Quran is not for the dead. Quran is for a living person, so that you understand this Yasin that is going around us is supposed to be something that will give us little by little understanding of what life is all about. It will give us that understanding. Or I will have Quran and there's a wedding or something like that. So that's the second group. Each of these groups, according to our scholars, are known as those who have abandoned the Quran. Even though I'm reading once a year, I'll get my sawab. Sawab will be there. Or I will read when somebody dies and all. Allah will give you. The reward is there. But the more than reward is protection for us all. We want some protection. We want some security. Reward, what is reward if I don't have any security? So that is security. He said the third group is that group that will recite the Quran, but then they will never follow that Quran. They have also abandoned. And there are those who keep Quran in their heart. Many times you will hear such and such person can recite the entire Quran. But the Holy Prophet also said that those who may recite the whole Quran may never act according to the Quran. I said that on the day of marriage, we put the Quran on top of the head of the young man. We are saying what? That may Allah keep you under the shadow of that Holy Quran. Meaning that what I am going to do now, I'll follow that Quran. But you keep it on my head and I have no idea. I've never read Quran. I don't know what my father did put on my head. Many times I'll sit down with young generation and they'll tell me, Hussein bhai, जब बाप नहीं पढ़ता, जब माँ नहीं पढ़ती, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? Right? Children, you know, when you perform namaz, a classic example, happens in every home. I pray namaz on my own. I'm saying Allahu Akbar. I have a 2 or 3 year old that comes and stands next to me. Because he sees or she sees that I'm performing salat. So I say Allahu Akbar. And they will also say Allahu Akbar. Then what happens? The kid goes away. He goes into the kitchen and somewhere and then roams around the house and starts to come back and you are already in the sajda. So he goes directly into sajda. Right? The scholars say the difference between me and the child is that I am doing my namaz, but my mind is everywhere. The difference is that that child, when he wants to do something, he just goes and does it. But my mind is roaming all over the place.
We are very fortunate that our Maharajas tell us that if a thought process comes into your mind, your namaz is still valid. Because humans, it will happen. So this is what happens. There was at one time, the Holy Prophet said to the people that if you perform salat without thinking, the Prophet said, without thinking, then I'll give you Jannah and a beautiful camel. If you perform your salat without thinking, nothing. So somebody like me comes, he said, you have to go and recite in that mosque. There was a mosque there. He said, you go and recite, perform your namaz there. So this person said, Allahu Akbar. As soon as he raised his eyes, he saw a crack on the wall. He said to himself, I'll fix it. Allah. He doesn't say it, but it is in his head. I'm going to fix that because now his attention is gone. The Holy Prophet said, I want full attention. I want absolute attention that when you're praying salat. Everybody came and everybody said, well, I was thinking of painting the mosque and I was thinking about this thing. And they didn't say to the Prophet. The Prophet told him, he said, when you were standing there for namaz, you were thinking about painting the mosque, weren't you? He said, oh, yeah, that came into my mind. He said, then you didn't concentrate 100%. Nobody did. Right. When Imam Ali alayhi salam came and the Holy Prophet said, Ya Ali, I know what you were thinking too. You were thinking not about that mosque or anything. You are thinking about how you are going to give this camel in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. When my mind goes to Allah subhanahu wa ta'ala, then it is part of my worship. Because that is the reason I'm doing this. Imam Rida alayhi salam has said that he explains beautifully and he says that when you say Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, I'm standing and I say Allahu Akbar, at that point you are disconnected with the world. You are now between you and Allah. Realize that first Allahu Akbar I say. I'm disconnected. Now I can't go into my pocket and look for my handkerchief and all this other stuff that sometimes you find people doing while they are standing. No, we are disconnected. But he said, look at the beauty, what the Imam is saying. So because somebody asked him, he said, why is it that when we start namaz, we say Allahu Akbar? When we finish the namaz, we say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How come we don't finish with azan, with Allahu Akbar? And Imam is saying that first Allahu Akbar connects you with Allah, disconnects you with the world. When you come to Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, now Allah is saying, now you get reconnected with the rest of the world. And you reconnect by conveying salams to them. That's how important salam is what it's teaching us. So we have to think. Now, but there are some people who may think, you know, I don't know how to recite Quran. I know how to recite, but I don't know. I don't know what it means. Although there are meanings in every language now. But we will say, well, I just don't know. I have no idea. Even if I listen, that's important. If I can't recite, then listen. If I can read the meaning of it, read. But stay connected with the Holy Quran somehow. An old man was sitting and his grandchild comes to him and he said, my grandpa, what are you doing? He said, I'm reading the Holy Quran. He said, do you understand? The grandpa said, I don't understand. He said, then why are you wasting your time? Right?
You are reading, but you don't even understand what you're reading, but you're enjoying that. Isn't that something? He said, you are enjoying that. You seem to be so happy, you're reciting, but you don't know anything what is there, what you just said. He said, I don't. He said, then why waste your time? So the old man, grandfather said, give me 1 day and I will tell you. Next day, the child comes, said, so did you decide? He said, yes. He said, I want you to take this basket. It was weaved basket, so it had little holes everywhere. He said, I want you to take this basket to the river and get some water for me. Now, he was a little kid. He said, are you kidding me? You mean I go there, get water in a basket? He said, yes, that's what I want you to do. Go and do it. And just bring that water to me. So the poor kid goes there, gets some water, runs over, comes to his grandfather. By the time he got there was no water left. The basket was empty. He said, you see, I told you, there will be no water in this thing. He said, I know, but go back again. He said, no. He said, no, you go back, I'm telling you. You want an answer? I will give you, go back. He goes back. He grabs the basket, he pours the water in it, takes the water, comes over to his grandfather. By the time he reaches there, the basket is empty. Now the grandfather said, can you do it the third time? He said, no, I won't do it the third time. Just tell me. He said, please do one more time. So he goes there, he does that, he comes back, it's empty. So he says, it's empty. And the grandfather says, look carefully inside that basket. He said, yeah, I have looked at it. There is nothing in it. There's no water in it. He said, yeah, but it is there. Look closely. He said, no, I can't find anything. He said, you can't find anything. You went and fetched water 3 times. Have you noticed how clean this basket is? How clean this basket is. You see, he said, this recitation of the Quran that I am doing cleans my mind and my heart. Because both of them rust. And to remove that rust, I read the Holy Quran. And it was this very thing that those people who were standing in Karbala to kill Abu Abdullah al-Hussein, they thought Imam Hussein is bringing Quran with him. They didn't know that it was Ali Asghar. They thought it was a Quran. Allama Iqbal, this time I went to Lahore and I saw his history, and what a remarkable history this man has in Lahore. But look at what he has said. He said when Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail went into Masjid al-Khif, and the event was for Ibrahim to slaughter his son, Ismail. He was supposed to slaughter his head. Ismail tells Ibrahim, you can do that, but Baba, I have 3 conditions. The first condition is make sure you cover your eyes, that you don't see me dying and you will not be able to see me cut the throat. I don't want you to see that. He said, the second thing I want you to do is tie my legs and my hands so tight, because I don't want you to see how much I'm gasping for air. तड़प जाऊंगा मैं. मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे देख इस हालत में. And the third thing, he said, when I'm dead, do not give my clothes that come out of me to my mother, because she will die if she knows I'm gone. This is Abu Abdullah al-Hussein. Imagine how difficult it must have been. You know, we cry for Abbas.
We cry for Ali Akbar, but nobody cries as much as we cry for Ali Asghar. He was only a 6-month-old baby. What could he have done wrong in his life? He was a masoom. But still, Janab Zainab calls Abu Abdullah Hussein and says, come here to the tent. He said, when you said, Hal min nasirin yansuruna, Ali Asghar fell from the swing that he was on. And Imam Hussein looks at Zainab, and Janab Zainab looks at this child, and she says, you know how hard this child is getting? It was getting still, like a stillborn baby, because it had not been fed any water or milk. It was hard for the child to survive, but it was there. So Imam Hussein said, Zainab, I want you to bring some clothes to spread out so we can lay Ali Asghar on that. He tells Janab Rabab, I don't think you can see this, Rabab. Zainab goes, grabs a white sheet, puts Ali Asghar and wraps him up in such a way, like as if it was kafan on Ali Asghar. And then she lifts him up and she gives it to Imam Hussein alayhi salam and says, अरे इतना इस नन्हे बच्चे ने पानी नहीं पिया, माँ का दूध खुश्क हो गया है। उसी वक्त इमाम हुसैन ने बच्चे को लिया, बच्चे को लेकर चले मैदान में। अबा के नीचे रखा हुआ था, लोग समझते थे कि कुरान आया है, शायद हुसैन कुरान के बयाने में वो मांगेंगे पानी कि मुझे पानी दो, लेकिन नहीं। जब वहां पहुंचे तो अबा का साया हटाया और लोगों ने देखा कि एक 6 महीने का बच्चा है, सिर्फ बच्चा है। तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो हाथ उठाकर, क्या है दुश्मनों, देखो ये बच्चा है, इसने पानी नहीं पिया। अरे बैयत तो मैंने नहीं की थी, इस बच्चे ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है। लोग, उमर इब्न साद उस वक्त हुरमला को कहता है कि हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, इसके कलाम को खत्म कर दो। हुरमला, जब मुख्तार ने हुरमला को, जब वो हुरमला को लाया, तब हुरमला से पूछते हैं मुख्तार कि तुमने रोज़े आशूर कितने तीर फेंके थे? उसने कहा 7 तीर, 3 तीर में नाकामयाब रहा, 4 तीर में कामयाब रहा। पहला तीर मैंने दिया था वो अब्दुल्ला इब्न हसन के चेस्ट पे लगा था, छाती पे लगा था। दूसरा तीर अब्बास की आंख में लगा था। तीसरा तीर हुसैन के जिगर में लगा था और चौथा तीर अली असगर के गले में लगा था। उस वक्त इमाम आते हैं, बच्चे को नीचे रखते हैं, कहते हैं कि भाई मैं बच्चे को नीचे रख देता हूं, अगर तुम्हें ऐसा हो कि मैं पानी पी जाऊंगा तो आकर तुम खुद उसको पानी दे दो। किसी ने नहीं सुना तो इमाम ने हाथ उठाया। अरे अजीजो, इसमें से एक आदमी था, ये वही था कि जब होर को पानी दिया गया था तो एक आदमी
था जो पानी नहीं पी सकता था और उसका घोड़ा भी नहीं पी सकता था, तो उस वक्त इमाम ने आकर उसको मदद की थी, पानी दिया और घोड़े को पानी पिलाया। आज वही शख्स वही घोड़े पे सवार होके कहता है कि अब अब्दुल्लाह हुसैन के बच्चे को निसार कर दो। अजीज़ान गिरामी, अरे उस वक्त हुरमला को पूछता है मुख्तार कि वो 3 तीर का क्या हुआ था? उसने कहा कि मैंने जब तीर कमान में जोड़ा मैं छोड़ने वाला ही था, लेकिन एक औरत को मैंने देखा दूर से, अबा में थी, चादर में, और कहती है हुरमला तेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे को तू क्यों शहीद करना चाहता है? 3 मरतबा वो आई और तीर गिर गया। जब आखिर का तीर चला तो असगर के गले में, असगर के कान में आके गले से निकला और इमाम को लगा। अरे ये 3 भल का तीर था जो ये लोग जानवरों को मारने के लिए रखते थे। रबाब ने कहा था ये कैसे इंसान है कि जिस तीर को ये लोग जानवर को मारते हैं आज मेरे बच्चे को मार दिया। इमाम ने अली असगर का खून लिया, चाहा कि आसमान की तरफ फेंके, आसमान ने कहा यहां नहीं फेंकना वरना एक कतरा पानी नहीं गिरेगा। हुसैन ने चाहा कि जमीन पर रखे खून को, तो जमीन ने कहा यहाँ अली असगर का खून नहीं बहाना वरना एक दाना नहीं उगेगा। हुसैन ने वो खून लिया, अपनी दाढ़ी में मिलकर कहते हैं या अल्लाह मैं तेरे सामने इस तरह से आऊंगा। अरे इज़ाज़ान गिरामी, Hussein turns himself to go towards the tent. I'm saying this in English because I want you to understand tomorrow when you will perform the Amal of Ashura, you will remember this scene. Imam turns with the child and is getting ready to go towards the tent. But how can he present a child to the mother in the condition that he was in? So he goes 7 times, he goes back and forth saying inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, rizan bi qada'ihi wa tasliman li amri. 7th time he reaches the door of the tent और उसी वक्त असगर को देखकर, अरे मैं क्या बताऊं एक माँ की कैसी हालत हुई होगी कि भाग गया था पानी के लिए, आया तो जिंदगी चली गई। बच्चे को लेकर आए इमाम, कहते हैं रबाब तू मेरे साथ चल, खैमे के पीछे हम कब्र खोदे क्योंकि कुछ देर में ये लोग घोड़े दौड़ाएंगे और मेरी लाश पामाल करेंगे। मैं नहीं चाहता कि ये लोग अली अकबर की लाश को पामाल कर दे। अरे उस वक्त इमाम जाते हैं जनाब रबाब के साथ और कब्र खोदना शुरू किया। उस वक्त हुसैन अल्लाह की तरफ देखते हैं और कहते हैं बारह कभी देखा है एक बाप एक माँ
खड़े हैं कब्र के करीब और अपने बच्चे के लिए कब्र खोद रहे हैं, कभी देखा है? अरे उस वक्त इमाम ने अली अस्कर को कब्र पे लिटाया, कहा बेटा खुदा हाफिज, अरे मेरे नाना को सलाम देना। तारीख कहती है, ये दो तारीखें हैं, एक तारीख है कि सुगरा का कासिद आया, या तो अली अकबर की लाश पे आया, या तो अगर वो आया तो अली असगर की मैयत पे आया। लेकिन क्या लिखे हुसैन, सुगरा को क्या बताए कि क्या हुआ अली असगर को? अरे उसी वक्त कब्र बंद कर दी। तारीख कहती है कि दूसरे दिन ये लोग गिनते रहे कि कितने सर आए हैं। किसी ने कहा कि एक सर नहीं आया। उमर इब्ने साद ने कहा कि जाओ देखो कहाँ है। 4 घोड़े सवार को नेज़े दिए, ये लोग घोड़े पे जा रहे थे नेज़े को। अरे एक का नेज़ा अली असगर के बदन में लगा, जब निकाला तो अली असगर की लाश निकली। अरे उसने जाकर उसका सर काट दिया। रबाब ने कहा अल्लाह अकबर, तेरे ज़ैनब तुम्हें अल्लाह को सौंपा। शे कहते थे ज़ैनब तुम्हें अल्लाह को सौंपा। हम जाते हैं बहना, हम जाते हैं बहना। होशियार हो वक्त आया बराबर की क़ज़ा का। हम जाते हैं बहना, हम जाते हैं बहना। परदेस में देता ना विगा तुमको बरादर, पर क्या करूं ख्वाहर। मजबूर हूँ कुछ बस नहीं, जो हुक्म खुदा का। हम जाते हैं बहना, सुहरा को दुआ देना, गले खूब लगाना। अरे यसरब में जो जाना, क्या और ज्यादा फुर्सत नहीं आशा। हम जाते हैं बहना, हम जाते हैं बहना। कहना कि तेरी याद में सोना तेरा बाबा, हसरत ज़्यादा उठा। और गर पानी मिले
फातिहा शरबत पे दिलाना, हम जाते हैं बहना। और बाद मेरे बच्चे हैं सब तेरे हवाले, गर याद करे मुझको तसल्ली ने देना, हम जाते हैं बहना। मारे जो सकीना को अगर शिमला सितमगर, और छीने वो गौहर बेटी को मेरी हाथ से, जालिम को बचाना, हम जाते हैं बहना। सीने पे अगर मेरे चेहरे सिमरे सितम गर, और काटे मेरा सर, ये हाल मेरा जाके न सोला को बताना, हम जाते हैं बहना, हम जाते हैं बहना, हम जाते हैं बहना, हम जाते हैं बहना। शे कहते थे ज़ैनब तूने अल्लाह को सौंपा, ज़ैनब निकाले बात, हम जाते हैं बहना, हम जाते हैं बहना। Why Hussein push the shoot? 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 Why Hussein? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar
Rasulullah.
बाबा का करते करते इंतजार, जब थक गई सुगरा, अरे रो रो के अपने बाबा को सुगरा ने खत लिखा, तुम गए घर से मेरी लुट गई दुनिया बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, करबला जाके हमें भूल गए क्या बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा, हाय किसका गिला किसकी शिकायत देखूं, हाय किसका गिला किसकी शिकायत देखूं, एक नाम किसी ने सुना लिखा बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, कह गए थे मेरे भैया तुम्हें ले जाऊंगा, कह गए थे मेरे भैया तुम्हें ले जाऊंगा, वाली ने मुझे आए ना भैया बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, ये मुकद्दर मेरा तन्हा मैं यहाँ दोषी हूँ, ये मुकद्दर मेरा तन्हा मैं यहाँ दोषी हूँ, कौन दे मुझको तसल्ली ये बताना बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, अब तो असगर भी मेरा क्यों चलता होगा, अब तो असगर भी मेरा क्यों चलता होगा, को मेरा नाम बताना बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, नाम सुनकर मेरा हुम के तो तुम्हें तेरी कसम, नाम सुनकर मेरा हुम के तो तुम्हें तेरी कसम, मेरी जानिब से गले जैसे लगाना बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, करबला जाके हमें भूल गए क्या बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा,
असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, पूजा लेकर हाथों में वो, लेकर हाथों में वो तुझको ढूंढने जाती है। कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, पानी जब पाया प्यासों ने लाल कलेजा थाम लिया। लाल कलेजा थाम लिया, तेरी हमशीर सकीना ने लेकर तेरा ये नाम लिया। मेरी जान से आओ। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, पानी न मिला है लाड़ तुझे और तीर से तेरी प्यास बुझी। और तीर से तेरी प्यास बुझी, मासूम सकीना हाथों में मशकीज़ा लेकर कहती थी, ऐ मेरी जान पानी पी लो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, पानी में तेरा चेहरा उसको आता है नजर, वो रोती है। नजर वो रोती है, फैलाए बात ये दामन को हमशीर फुगा ये करती है। मेरे परेशान सदा दो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, कुछ तो बोलो आंखें खोलो। असगर बहन बुलाती है, या हुसैन 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 या हुसैन। लोरियां वाला तेरा जल गए झूला तेरा, शाम बहंदे पैया असगर वीर वे हुण अलविदा। लोरियां वाला बिरा जल गया झूला तेरा, शाम बहंदे पैया असगर वीर वे हुण अलविदा। लोरियां वाला बिरा चल के आई झूला
शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा लोरिया वाला झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा लोरिया वाला चल के आई झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा डोरिया वाला बिरा चल के आई झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा डोरिया वाला बिरा झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा देवा लुटदा हाल क्या रास आई नहीं कर बला शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा डोरिया वाला बिरा चल के आई झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा डोरिया वाला बिरा चल के आई झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा फुल जिया तेरा बदन है जो मोहताजे फुल जिया तेरा है जो मोहताजे हुंदा करके दिल में दफन प्यो वांगू तू बेनवा मां वांगू मैं बेरदा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा डोरिया वाला बिरा चल गया झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा डोरिया वाला बिरा चल गया झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा तेरे झल के सुम किए तेके वखरा बम किए सुम किए वखरा मौत तू भी तू करा मातम किए वेख रोंदे रहे कदा आखिरी पैंडे अदा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा डोरिया वाला बिरा चल के आए झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा डोरिया वाला बिरा जब गया झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा लोरी सुन हम शीर तू उजड़ी मां दिल गिर तू लोरी सुन शीर तू उजड़ी मां दिल गिर साला देर जागीर तू माखड़ी देंगे दुआ खत्म रसियां बाल चा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा डोरिया वाला बिरा चल के झूला तेरा शाम वैंदी पैया असगर वीर वे हुण अलविदा डोरिया वाला बिरा चल के झूला तेरा नाम वैंदी पैया
असगर बेरवे हुण अलविदा एक हथ आजाद नहीं ढोली भी आबाद नहीं एक हथ आजाद नहीं ढोली भी आबाद नहीं भैन दे मां कोल बच्चिया कुछ भी सैंडे बात उजड़ी कुएं ठाट सा तीन शीशा सेवा शाम बंदे पैया असगर वेरवे हुण अलविदा लोरिया वाला बेरा जल गया है झूला तेरा शाम बंदे पैया असगर वेरवे हुण अलविदा लोरिया वाला बेरा चल गया है झूला तेरा शाम बंदे पैया असगर बेरवे हुण अलविदा याद सा बेशीर वे अपनी मैं तकदीर वे याद सा बेशीर वे अपनी मैं तकदीर वे बेदा खातिर छिड़का देंदा शेर वे है तेरी मकसद दवा कुछ भी नहीं साडारिया शाम बंदे पैया असगर बेरवे हुण अलविदा डोरिया वाला बेरा चल गया है झूला तेरा शाम बंदे पैया असगर बेरवे हुण अलविदा लोरिया वाला बेरा चल गया है झूला तेरा शाम बंदे पैया असगर बेरवे हुण अलविदा तीर झल के सुम किए देखे वखरा गम किए तीर झल के सुम किए देखे वखरा गम तीर मत कुल मौत कूदी तू करा मातम दिए वेख रोंदे रहे कदा अदा शाम बंदे पैया असगर बेरवे हुण अलविदा लोरिया वाला बेरा चल गया है झूला तेरा शाम बंदे पैया असगर बेरवे हुण अलविदा तेवा लुटदा हाल क्या रास आई नहीं कर भला शाम बंदे पैया असगर बेरवे हुण अलविदा लोरिया वाला बेरा आजा बिलाल असगर आजा बिलाल असगर आजा बिलाल असगर आजा बिलाल असगर झूला तेरा झूलावा पे आए भादो आजा ये बारी गावा आजा बिलाल असगर आजा बिलाल असगर झूला तेरा झूलावा मानो आजा ये बारी गावा आजा बिलाल असगर आजा बिलाल असगर आमेर आमदनीने आरी गरम जमीने आमेर आमदनीने आरी गरम जमीने आजा आगे कीचा बनावा आजा बिलाल असगर आजा बिलाल असगर झूला झूलावा यूनुस के आए मानो आजा
क्या ये नाजुक सा गला था तीर खाने के लिए, क्या ये नाजुक सा गला था तीर खाने के लिए, क्या ये नाजुक सा गला था तीर खाने के लिए, क्या ये नाजुक सा गला तीर खाने के लिए। प्रण में लाया था इसे, प्रण में लाया था इसे पानी पिलाने के लिए, माँ कहीं मर ही न जाए देख करना शिद से तीर खाया है अरे असगर नसू के हल्क पर किस तरह खेमों में जाऊं, किस तरह खेमों में जाऊं ये बताने के लिए, क्या ये नाजुक सा गला था तीर खाने के लिए, क्या ये नाजुक सा गला था तीर खाने के लिए। तरस क्यों आया न तुमको देख कर असगर का, कम सिनी में भी रखा है उसने बाबा का ख्याल, तीर खाया मेरे बाजू, तीर खाया मेरे बाजू को बचाने के लिए, तीर खाने के लिए, क्या ये नाजुक सा गला तीर खाने के लिए। कोने अर्दु जाकर सकीना को ये बतलाएगा अब, उसको क्या मालूम थे असगर नहीं आएगा अब, मुंतज़िर बैठी है वो, मुंतज़िर बैठी है वो, झूला
झुलाने के लिए, क्या ये नाजुक सा गला था तीर खाने के लिए, क्या ये नाजुक सा गला था तीर खाने के लिए। रंग में लाया था इसे, रंग में लाया था इसे पानी पिलाने के लिए, क्या ये नाजुक सा गला था तीर खाने के लिए, क्या ये नाजुक सा गला था तीर खाने के लिए। या हुसैन, 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 या हुसैन। मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना। बेजुबान ने ये झूले से आवाज दी, अपने आज़र का लो अब सलाम आखिरी, अपने आज़र का लो अब सलाम आखिरी। मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना। रन में जिस वक्त हलमिन की गूंजी सदा, मुस्तरब हो गया शह का माहे दफा, खैमाए शाह में शोर गिरया हुआ, अपनी माँ से इशारों में कहने लगा, अपनी माँ से इशारों में कहने लगा। मेरे बाबा को अब है जरूरत मेरी, उनके हाथों पे होगी शहादत मेरी। मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना। मेरा बाबा है फौजों में कंधा घिरा, उनकी नुसरत को जाना है फर्ज मेरा। रन से आने लगी अलमदद की सदा, काट देना लगी हाय सूखा गला, काट देना लगी हाय सूखा गला। मेरे रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं, मैं उलटूंगा ये आसमां और जमीन। मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना। रोज़े महशर ये पूछेंगी जब फातिमा, अपने आज़र का फिदया न तुमने दिया, मेरा शबीर मारा गया बेखता, अब तो लिल्लाह तो मुझको इसे विदा, अब तो लिल्लाह तो मुझको इसे विदा। चलना सीखा नहीं है मगर जाऊंगा, मैं तुम्हें सुरसरो आज चल जाऊंगा। मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना। बोलना तक अभी मुझको आया नहीं, नन्हे हाथों ने कुछ भी उठाया नहीं, तीरो शमशीर मैंने चलाया नहीं, जंग करना किसी ने सिखाया नहीं, जंग करना किसी ने सिखाया। मेरे हाथों में मैदान तलवार है, बस ये सूखी ज़बां मेरा हथियार है। मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना।
जितना दिल चाहे वो मेरे बाबा पे रो, नौजवानी ये अकबर का नौहा करो, जिसके शाने कटे उसका मातम करो। मेरा क्या है सुनो मेरी मादर सुनो, मेरा क्या है सुनो मेरी मादर सुनो। 6 महीने का हूँ कुछ भी देखा नहीं, सोच लेना मैं दुनिया में आया नहीं। मेरी माँ तुम मेरा गम न करना, मेरी माँ तुम मेरा गम न करना। इमाम या हसन या हुसैन, इमाम या हसन या हुसैन, इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो ज़ियारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़म अल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकी या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या हसनुल मुज्तबा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अली इब्नुल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्रि वज़ ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन। अस्सलामु अलैका या कअबतल ईमान। अस्सलामु अलैका या इमामल इंसी वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फरजैक व सहहलल्लाहु तआला मखरजैक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ली साआ वलियन व हाफिज़ा व कायदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़कतहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या मोहम्मद। ख़वातीन व हज़रात, हाज़ा खाने में अगर किसी की कोई चीज़ गिर गई है तो वो बराए मेहरबानी